The very meaning of the word rectum. Meaning of the word rectum means straight. In human beings, the rectum is not straight because human beings are straight. We have a straight posture and therefore we don't have a straight rectum. If you see in a four-legged animal, आपने बचपन में ऐसा ड्रॉ किया रहेगा ना डायग्राम, उनका रेक्टम स्ट्रेट होता है, उनका रेक्टम स्ट्रेट होता है, एकदम स्ट्रेट. बट हम लोग सीधे हैं तो वी कैनॉट हैव अ स्ट्रेट रेक्टम बिकॉज द स्टूल विल सैग डाउन अगेन एंड अगेन. एंड फॉर दिस रीजन द रेक्टम शोज For this reason, the rectum shows two anterior-posterior curvatures and three lateral curvatures. So, what are the two anterior-posterior curvatures? The rectum, if this is the sacrum, the rectum goes like this from S3 level. S3. It extends from S3 and then turns like this into anal canal. So there are two curvatures. One is concave, okay, along the sacrum, and one is convex. Concave and convex. त्याला नावं पण दिली आहेत बघ. सेक्रल कर्वेचर आणि ह्याला काय नाव दिलंय? पेरिनियल कर्वेचर. सो सेक्रल कर्वेचर इज concave and perineal curvature is convex. Rectum starts from S3, sigmoid colon ends at S3, and then it ends a few centimeters in front and below the coccyx, from where there is anal canal. उससे उधर से anal canal आता है. Anal canal is very short. Rectum is 5 inches. क्या है लेंथ रेक्टम का? 5 इंचेस. रेक्टम इज 5 इंचेस. तो ये दो कर्वेचर्स कौन से हैं? एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर्स. वन इज सेक्रल कॉन्केविटी एंड पेरिनियल कॉन्वेक्सिटी. देयर आर टू लैटरल कर्वेचर्स. ओके, उसमें से one is to the right, one is to the left, and another is to the right. Right, left, right. Right, left, right. This is right one, this is right two. Okay? तो राइट साइड पे दो, लेफ्ट साइड पे एक. इतना सब क्यों? So that the stool doesn't sag down. The stool doesn't sag down. Now rectum in lower animals, I said, is straight like this. तो how do we identify? तो इसके लिए आप देखते हो कि जो कुछ एनिमल्स है वो लोग ये रेक्टम में से स्टूल पास करने के लिए, suppose animal is like this, then they make their rear portion like this and then they pass the stool. Okay, even if you are the king of the jungle, the lion, ऐसा होना पड़ता है उसको. Now difference between vegetarian and non-vegetarian. जो कौन सारे एनिमल्स का रेक्टम ऐसा रहता है?
बट जो वेजिटेरियन एनिमल्स है वो लोग अपना रेयर को पीछे नहीं करते, वो लोग ऐसे ही खड़े रहते, बिकॉज दे आर सो डाइट इज फुल ऑफ फाइबर, फुल ऑफ फाइबर। काऊ कभी ऐसा नहीं करती, एलिफेंट भी ऐसा ही खड़ा रहता है, ठाक 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 ठाक, लोग भागते दूर। एफर्टलेस पासिंग ऑफ स्टूल, वेजिटेरियन एनिमल्स। उसी के कॉन्ट्रास्ट में आप अगर नॉन वेजिटेरियन एनिमल देखेंगे, लायन देखो, लायन अभी आप बोलेंगे लायन को, और वो भी स्टूल पास करते हुए इधर कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बोल रहे, तो कितनी बार सफारी में गए वो लायन दिखाई नहीं, अभी आप बोले कि उधर जाके देखो वो स्टूल कैसे पास करते हैं। कुत्ते को देखो, कुत्ता वो तो अपने को दिखता ही है, जब जिधर नहीं मांगता है वो स्टूल पास करता है। कुत्ता, बिल्ली, वो लोग अपना रेयर को पीछे करते हैं, तो ओरिजिनली दे आर नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स। और उनका चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, देखा आपने कुत्ता कैसा कर रहा है, स्ट्रेन कर रहा है यार, बस दैट्स द मंत्र। आपको कैसा स्टूल पास करना है, एफर्टलेस, और यू चूज योर डाइट, डाइट फुल ऑफ फाइबर, एफर्टलेस पासिंग ऑफ स्टूल। ये रेक्टल एनल कैनाल, आप सर्जरी पोस्टिंग में जाओगे ना, एक के पीछे एक पेशेंट ऐसा है ना, वो ब्लीडिंग हो रहा है, कुछ तो बाहर आ रहा है, पाइल्स, ये हो रहा है, पस है, स्वेलिंग है, ये है, वो है। उसमें से 99% पीपल आर हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस, क्योंकि जो वेजिटेरियन जो खाली डाइट खाता है ना, घास फूस लोग देखे, अरे घास फूस खाता है तो अरे घास फूस, बेस्ट। एट द एंड ऑफ द डे आपको बताता हूँ, आप डॉक्टर के पास जाओगे एट एज ऑफ 35-40, वो बोलेगा अभी ये बंद करो, सलाद बढ़ाओ, फ्रूट बढ़ाओ, वही होता है। What is the best diet for any animal? What he can eat raw. A lion can eat raw flesh. फाड़ेगा खाएगा, अपन कर सकते हैं ऐसे, फाड़ेगा, अपने को वो मसाला, ये वो MDH चिकन मसाला, मटन मसाला, वो सब लगता है, राइट? अपन रॉ क्या खा सकते हैं विदाउट कुकिंग? फ्रूट्स, सैलड्स, सो दे आर बेस्ट फॉर अस, बेस्ट फॉर अस। कोई भी डाइटिशियन के पास जाएगा, बोलेंगे सलाद बढ़ाओ, फ्रूट बढ़ाओ, बीट खाओ, गाजर खाओ, ककड़ी खाओ, मूली खाओ, जितने फ्रूट्स खा सकते हो खाओ। सो फॉर एनी ऑर्गेनिज्म द बेस्ट फूड, वो हमारे लिए एक नेचुरल फूड है। So these are the rectal curvatures. Now coming to the relations of the rectum. Okay. The relations of the rectum. In abdomen we write relations in two ways. What are those relations? Peritoneal and visceral. In upper 1/3, middle 1/3, lower 1/3. In upper 1/3 the rectum is covered by peritoneum anteriorly and laterally. In middle 1/3 it is covered only anteriorly, and in lower 1/3 no peritoneum. No peritoneum. In lower 1/3 it is not covered by peritoneum. So upper 1/3 rectum is covered by peritoneum anteriorly and laterally. Middle 1/3 it is covered only anteriorly, and lower 1/3 it is not covered by peritoneum. Now coming to visceral relation. विसरल रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशन तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्या है पोस्टीरियर रिलेशन? S3, S4, S5। ओके, फिर बाद में वो मीडियन, सेक्रल, आर्टरीना, वो सब रहेगा। मेन इज S3, S3। नाउ एंटीरियर रिलेशन देखो, अपर 2/3 में पेरिटोनियम है, करेक्ट? अपर 2/3 में पेरिटोनियम है, अपर 2/3 में पेरिटोनियम, लोअर में नहीं है। ओके, सो
In males, upper two-third will form rectovesical pouch. Upper two-third will be related to rectovesical pouch, which will contain coils of intestine. Lower one-third in males, तो यहाँ पे रहेगा bladder वगैरह, right? Bladder, then prostate के पीछे seminal vesicles. So lower one-third will be related to prostate, seminal vesicles in males. And that is one reason patient coming with prostatic enlargement is diagnosed by per rectal examination. Because if I do per rectal examination, put my finger in the rectum, anteriorly is prostate. So lower one-third anterior relation is prostate and seminal vesicles. Prostate and seminal vesicles. These seminal vesicles are full of components of semen. In our Indian traditional thing, they say that unnecessarily, if a person, like sometimes, a patient may come with nocturnal discharge of semen. So one of the cause of that is chronic constipation also. Because if the rectum is constipated, okay, stool is not passing, it may push upon the seminal vesicles. And that may happen, the seminal vesicles may discharge the secretions. Okay, so those who are having such a problem, they are advised कि आप रात को एक बार washroom use करो, clear your bowels, so that this doesn't happen. I'm just giving you. Main thing is prostatic enlargement. Prostatic enlargement में per rectal examination करते हैं. Now in females also it will be related to recto-uterine pouch, upper two-third, and lower one-third will be related to the vagina. Lower one-third related to vagina. Okay, so rectum के relations posteriorly 3 vertebra है और anteriorly, anterior relations are divided into upper two-third, lower one-third. Upper two-third, lower one-third. Blood supplies by superior rectal artery, which is a continuation of superior rectal artery, which is a continuation of inferior mesenteric artery. Now let us study the next thing, that is the anal canal. Now rectum we have seen ends like this, and then here the anal canal starts. Here is one muscle. What is the name of this muscle? Which is going anteriorly to the pubis, and pubis जरा सा और आगे रहेगा, मैंने इधर पास में निकाला है, हाँ? Puborectalis. So this puborectalis keeps this angle pulled like this, so that stool doesn't pass, doesn't sag down. Okay? Now when does puborectalis relax? Puborectalis relaxes only when we sit in squatting position. Squatting, not western toilet. Squatting position में वो relax होता है. Okay? And therefore, the importance of Indian toilet. ये ब्रिटिशर्स आके हमको देखे गए, हम बोल गए यार ये तो अच्छा है, खाली बैठने गए इधर चेयर पे बैठे जैसा. But puborectalis doesn't relax. Now if puborectalis does not relax, what happens is the stool will still pass, hitting and inflaming the rectum. That is one of the causes for rectal cancer. Other causes is, in Western world, rectal cancer is because of excessive non-veg food and their toilet habits.
उधर कोलोनिक कैंसर, रेक्टल कैंसर ऐसा रैम्पेंट है वेस्टर्न कंट्रीज में. सो जिधर पॉसिबल है पीपल शुड, जब तक पॉसिबल है आपके एज के हिसाब से, पीपल शुड यूज अ इंडियन टॉयलेट. अब बोलेंगे हमारे पास तो ऑलरेडी वेस्टर्न, चढ़ के बैठो उसके ऊपर. तो दिस मसल रिलैक्सेस ओनली इन स्क्वाटिंग पोजीशन. आपको लग रहा है यार ये सर क्या है बताते हैं, आप गूगल पे जाओ और एक सर्च करो, सिंपल सर्च वर्ड्स आप सुन के हंसोगे, हाउ टू पूप. ऐसा एक वेबसाइट है, उसमें उन्होंने ये पूरा रिसर्च करके ये प्यूबोरेक्टलिस के बारे में भी लिखा है. दे हैव स्टडीड दिस. और इस वेबसाइट का नाम मत लिखो, दैट्स ओके. नाउ I am talking about the anal canal, which starts 2 to 3 centimeters below and front of the coccyx, and then runs a very short course of 38 millimeters only. कितना? 38 millimeters only. मैं इसको जरा सा ब्रॉड करके आपको सिखा. 38 millimeters only. Okay? In this 38 millimeters मतलब कितना? 3.8 सेंटीमीटर, म्हणजे किती? एवढा. बट इसमें द नंबर ऑफ डिसीजेस दैट हैपन, उससे पूरा सर्जन का घर चलता है, उसका बंगलो बनता है, उसका मर्सिडीज निकलता है उसमें से, क्योंकि लोगों के ईटिंग हैबिट्स अच्छे नहीं है. Eating habits and many other things I'll talk about. First 15 millimeters is called as mucosal part. First 15 millimeters is called as mucosal part. उस mucosal part में, in the mucosal part, there are four things. Anal columns, ये जो vertical है, vertical anal columns. Four things. All the columns inferiorly are united by horizontal anal walls. Vertical क्या है? Anal columns. Four things I'm going to speak about. So then this is anal valves. Inside each anal valve there is an anal sinus. Inside each sinus there is a anal gland which opens. Anal gland. So above the wall is sinus, inside the sinus is gland. So what are the four things? Anal columns, vertical. Horizontally united by anal walls. Above the wall there is sinus. Shreyas, काय 4 गोष्टी म्युकसल पार्ट मध्ये कोण? तुझ्या बाजूची मुलगी उभा. माझ्या लेक्चर मध्ये तुम्ही बडबड करायचं डेअरिंग करताय. शेवटचं लेक्चर आलंय आपलं हे आता. बोला, काय असतात 4 गोष्टी? बाजूची मुलगी. एनल कॉलम्स. पहिला 15 मिलीमीटरचा पार्ट आपण डिस्कस करतो, त्या पार्टला काय म्हणतात? म्युकोजल पार्ट. एनल कॉलम्स. मग एनल वॉल्स आर हॉरिझॉन्टली कनेक्टिंग द कॉलम्स. Above the wall is anal sinus. Inside the sinus is anal gland. So mucosal part shows 4 things: anal columns, anal valves, anal sinus, anal glands.
The next is pectinate part. Because there are no anal columns, the mucosa here is seen clearly. उसके नीचे actually this is pectinate part. Next 15 millimeters is pectinate part. तो वो pectinate part में ना क्या होता है? अच्छा, this line is called as pectinate line. This is the watershed line of anal canal. Watershed line of anal canal. मतलब इसके above it is developed from endoderm, below by ectoderm. मतलब इसके above lesion हुआ तो painless होगा, इसके below होगा तो painful होगा. इसके above venous drainage is into portal, इसके below is into systemic. Nerve supply above is parasympathetic, sympathetic, below is from pudendal nerve. Pudendal nerve इनको सबको सप्लाई करती है S2, S3, S4. How is the parasympathetic outflow? चारों parasympathetic outflow कैसा होता है? Craniosacral thoracolum का. तुझे बात पूछूंगा, तुझा नाम क्या है? श्वेता. So craniosacral, cranial we know is from cranial nerve 3, 7, 9 and 10. So sacral is from sacral outflow S2, S3, S4 from a nerve called nervi arrhyngtis. Nervi arrhyngtis. Nervi arrhyngtis. So, parasympathetic outflow is craniosacral. Cranial outflow comes from third, which supplies pupil, seventh, which supplies the glands, ninth, which supplies salivary gland, 10 supplies the GIT, heart, lung. And sacral outflow is from nervi arrhyngtis S2, S3, S4. From same S2, S3, S4 arises pudendal nerve also, but this pudendal nerve is somatic. मतलब इनका जो सारा पेन टेम्परेचर ऑफ कोर्स इंफीरियर रेक्टल नर्व से होता है, पेन टेम्परेचर व्हिच इज अल्टीमेटली ब्रांच ऑफ pudendal only, but the pectinate line is the watershed line. So इसके above nerve supply is by sympathetic, parasympathetic, उसके नीचे it is by the somatic nerves. तो जो पेशेंट आता है बोलता है ब्लीडिंग है, तो हम उसको बोलते हैं ब्लीडिंग कैसा है, पेनफुल है, पेनलेस है? नहीं, कुछ तकलीफ नहीं बताया, ब्लड जा रहा था मेरे को, ऐसी तकलीफ नहीं, मैं बस सोचा यार 10 दिन हो गया ब्लड जा रहा है, इसके लिए मैं आया हूँ. मतलब लीजन कहाँ पे है? People are so scared to visit surgical OPD to tell this that वो बोलेंगे नहीं वो 2 महीने से हो ही रहा है, मुझे लगा कि ऐसे रुक जाएगा. People don't come. नहीं अच्छा लगता है किसी को ये एरिया में कुछ हो गया, इधर कुछ हो गया, इधर कुछ हो गया, इधर कुछ हो गया, सब आते हैं. प्राइवेट एरियाज में कुछ होता है, पेशेंट इज ऑल्सो रिलक्टेंट. इसके नीचे कुछ होता है ना तो ऐसा पेनफुल होता है ना, छोड़दार. एंड पैसेज ऑफ हार्ड स्टूल, अगेन लैक ऑफ फाइबर, यू नो दैट विल. आप बोलेंगे यार इधर मैं तो वेजिटेरियन है लेकिन मेरे को भी हार्ड स्टूल होता है, फिर आप वो बर्गर खाएंगे, दैट इज वो एनिमल के भी नीचे है वो. उसमें से सारा फाइबर निकाल दिया है ना. हमारे इंडिया में पहले ज्वार और बाजरा उगता था, फिर अंग्रेज आ गए और बोले कि अरे तुम लोग भिखारी लोग गेहूं खाओ, गेहूं. फिर हम लोग गेहूं खाने लगे. बचपन से सब लोग चपाती खा रहे हैं ना, एक हाथ कोई रहेगा जो बाजरा ज्वार भाकरी खाया, हाथ ऊपर करो. ओके, वेरी गुड. फिर अभी in 2025 people are talking about glycemic index and they are saying chapati is having high glycemic index, so switch to millets. What are millets? Jowar, bajra. So you are understanding हमारे साथ क्या हुआ है.
हमको बोला ये क्या चारकोल लगा रहे इधर, तो हम लोग ने बंद किया। फिर अभी कोलगेट चारकोल ब्रश। ओके, सो आवर सिस्टम्स वर सो परफेक्ट। ओके, तो वो हार्ड स्टूल आते आते एक वाल, बिकॉज ये दिस वाल्स आर मोर लाइक स्पीड ब्रेकर सो दैट स्टूल डजंट सैग डाउन फास्ट, बट हार्ड स्टूल एक आध वाल का ब्रेक करके इधर टेयर कॉज करता है। टेयर इन द एनल म्यूकोजा इज फिशर, एनल फिशर, आपने सुना रहेगा। Moment this anal fissure happens, the whole muscles around go into spasm, जोरदार spasm में चले जाते हैं। And then now the person passes more stool, there is already spasm of the anal sphincters that will again create more problems. And patient doesn't want to go to the OPD. He keeps on doing that. By the time fourth, fifth day, the whole fissure deepens. If the fissure deepens, it can cause a fistula also. Okay, so it's easy thing. You have to just give him soft diet, give him Softovac, give him Isofgol, give him Clemafin, and this will heal. This injury will heal. Give him some antibiotics. Tell him to sit in warm water. Warm water में बैठने को बोलते हैं हम उनको, तो उससे उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल के दिस कॉल्ड सीड्स बार, सो उससे वो एरिया साफ होता है। Because this area is what is passing through it is stool which is highly contaminated. तो इस एरिया का क्लीनलीनेस हम लोग रखते नहीं। हमारे यहाँ पे पहले अगेन ट्रेडिशनल सिस्टम में लोग जाते थे, धोते थे, वापस आते थे, अभी स्प्रे मारते। And then you know sometimes some people come, अरे नहीं थोड़ा मेरे को एक पेरियनल इरिटेशन था ये, तो because this area is not clean, then next time they go to pass stool they still find some particles. हमारे पास डॉक्टर करके एक डॉक्टर थे जे हॉस्पिटल में, he had taken a class on how to maintain anal hygiene. He was a surgeon, and then one of the witnesses he said the last time your anal canal was cleaned properly was done by your mother. From the point when you have started cleaning it is never clean. और मदर क्या करती है, साबुन बेबुन लगाते हैं यहाँ पे ऐसा 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 एकदम अच्छे से क्लीन करते हैं, so that this remains sterile. यहाँ पे पसीना आता है, यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है वो cutaneous part, which is 8 millimeters. In this cutaneous part there are hair follicles. इधर hair follicles है, वो hair follicle एक हाथ ब्लॉक हो गया तो easily infect होता है, because यहाँ पे infective material ही पास हो रहा है, यहाँ पे पसीना निकल रहा है, यहाँ से स्टूल निकल रहा है और लोग इसको धो भी नहीं रहे बराबर से। So perianal abscess, perianal abscess, और लोग इधर मेडिकल कॉलेज में बैठ रहे, लाइब्रेरी में बैठ रहे, उठने को तैयार नहीं। बैठने से क्या होता है, आपके इधर का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होता है। देखो आपने इसमें अपने फिंगर को प्रेस किया तो ऐसा उसमें होता है, ब्लड सप्लाई आपको दिखता है, वो एकदम सडनली यू फील इट पेन। ब्लड सप्लाई नहीं मतलब नो ल्यूकोसाइट्स, शेवटचा मुलगा, नो ल्यूकोसाइट्स। Okay, no leukocytes means less resistance. Okay, so बीच में उठो, चक्कर मारो। Okay, now here there is plexus. This is the internal venous plexus, which is there here also, which is, but we cannot see it so clearly. These veins of the anal canal, वहाँ से जो veins तैयार होती है, they are in 3 positions: 3 o'clock, 7 o'clock, 11 o'clock. 3, 7, 11. But ये यहाँ पे ऐसे दिखेंगे नहीं आपको, किसी के बॉडी में भी नहीं दिखेगी। ये जो venous plexus है, it forms 3 veins and then the veins they drain. When are they visible? When a person strains and strains and strains while passing stool, then these veins will dilate and that will cause piles or anal hemorrhoids. एनल हेमोरॉइड्स, एनल वैरिकोसिटी। आपने इधर का वैरिकोस वेन्स पढ़ा है, लोअर लिंब का, तो उभा रही थे, उभा तो फुल ट्राई मारते हैं तो उभा रही थे। आपने वेरिकोस वेन्स ऑफ लेग्स पढ़ा है, बराबर। There is strain on the veins of the lower limb that causes dilatation of the veins and that is called as varicose veins of the leg, बराबर।
Strain on the anal veins will cause varicosity. Another reason this can happen is this is a site of portocaval anastomosis above pectinate line, superior rectal vein, which becomes inferior mesenteric vein, which drains into splenic vein, which forms the portal vein. And below pectinate line is middle and inferior rectal veins. So this is a site of portocaval anastomosis. If there is liver failure, तभी भी यहाँ पे पाइल्स होगा. पेशेंट आपके पास आएगा पाइल्स के साथ और आप उसके पीछे पड़ोगे कि तुम स्ट्रेन करता है ना. नहीं सर, मैं स्ट्रेन नहीं करता हूँ. नॉनवेज खाता है ना ज़्यादा. नहीं सर, मैं वेजिटेरियन हूँ. आपको मालूम है, झूठ मत बोलो, फिर ऐसे कैसे है पाइल्स तुमको. नो, सो दैट मे बी बिकॉज ऑफ hepatic failure also. Piles every time does not mean strain. Piles may be because of liver failure also, because anal canal is a site of portocaval anastomosis. Okay? This line where the pectinate part ends is called as Hilton's line. Hilton's line. ये Hilton's line का significance क्या है कि यहाँ पे हमारा जो सर्कुलर मसल है, सर्कुलर मसल ऑफ द एनल कैनाल forms internal sphincter which ends at Hilton's line. Internal sphincter is formed by the circular muscle of the GIT. This internal sphincter is under autonomic nervous system. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. वो उसमें स्टूल आएगा, वो ओपन होगा. वो देखेगा नहीं कि तुम क्लासरूम में बैठा है, तुम बस में बैठा है, किधर है, अंदर टॉयलेट में ऑलरेडी कोई है. इट विल होगा. इसके लिए गॉड इज वेरी मर्सीफुल और उसने एक और स्फिंक्टर दिया है जो इधर है. एक पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. दैट इज द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर विच हैज थ्री पार्ट्स. एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर हैज थ्री पार्ट्स. उसमें से एक है डीप, दूसरा है सुपरफिशियल और तीसरा है सबक्यूटेनियस. डीप, सुपरफिशियल एंड सबक्यूटेनियस. ये दोनों के बीच में लॉन्जिट्यूडनल मसल आता है. सर्कुलर के साथ लॉन्जिट्यूडनल, वो यहाँ से ऐसे श्रेड्स दे देते हैं along with tuborectalis. ओके, लॉन्जिट्यूडनल मसल. डीप, सुपरफिशियल, सबक्यूटेनियस. उसमें से हमारा फ्रेंड, सच्चा फ्रेंड है सबक्यूटेनियस. उसको रखा है इंटरनल के बिलो. वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है. वो जो अक्षय कुमार और इसके जो पिक्चर थे ना, हेरा फेरी, ये बाहर, तो ये सबक्यूटेनियस स्फिंक्टर यहाँ पे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है. ओके, सो थ्री पार्ट्स: mucosal part, pectinate part and cutaneous part. In cutaneous part is actually skin. जो लास्ट का 8 मिलीमीटर है वो एक्चुअली स्किन है. pectinate part is 15 millimeters, mucosal part is 15 millimeters. 15, 8 यहाँ पे है एक्चुअली स्किन. उधर स्किन का जैसा रेगुलर अपना. सो क्लियर? Sphincters are clear. Internal sphincter formed by circular muscle and external sphincter is a separate muscle with three parts. Applied anatomy of the blood supply, nerve supply have covered under the pectinate line. Above pectinate line different, below pectinate line different. Everything at development, blood supply, venous drainage, nerve supply, all four are different. So above pectinate line will be the superior rectal artery, below is middle and inferior rectal artery. Okay, venous drainage will be also different. Okay, इसका जो venous drainage है ना, lower part, above का है internal ileal canal. Lower part of anal canal drains into superficial inguinal lymph nodes. तो पेशेंट यहाँ पे आएगा सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड के स्वेलिंग के साथ और वापस के पीछे पड़ोगे. क्या है, बाहर गया था क्या कहीं?
बाहर गया था मीन्स प्रोस्टिट्यूट के पास सेक्सुअली ट्रांस, नहीं सर सर ऐसा इधर कैसा, तो इधर कैसा स्वेलिंग हो गया फिर, हाँ नहीं सर मैं नहीं, मैं ब्रह्मचारी आदमी हूँ सर, या जोड़ बन जाएगा। फिर आपको समझेगा कि पीछे उसको यहाँ पे एब्सेस है, इसके लिए सुपरफिशियल एनल लिम्फ नोड्स हैव एनलार्ज्ड। ओके, फर्स्ट इज imperforate anus, applied anatomy, imperforate anus। एनल मेम्ब्रेन यहाँ पे होता है, वो परफोरेट होता है बिफोर बर्थ, वो परफोरेट ही नहीं हुआ तो पेशेंट द चाइल्ड विल नॉट पास टू, द चाइल्ड विल नॉट पास टू। तो एकदम, तो जब तक बच्चा ना दूध नहीं पीता है और स्टूल नहीं पास करता है तब तक वो पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैप्पी नहीं होता। अगर वो स्टूल पास करता है तो गुड। So there are many levels of imperforate anus, आपको हाइंड गट के इसमें बताया रहेगा। सेकेंड इज इन्वेस्टिगेशन, क्या बताएंगे इन्वेस्टिगेशन में? पर रेक्टल एग्जामिनेशन, प्रोक्टोस्कोपी, एनल कैनाल को देखने के लिए, कोलोन को देखने के लिए होता है कोलोनोस्कोपी, इसके लिए होता है प्रोक्टोस्कोपी। एक छोटा सा मेटल प्रोक्टोस्कोप होता है, वो डालते हैं और देखते हैं क्या लीजिए, प्रोक्टोस्कोपी। Third is medical problem. Rectum, if inflamed, is called proctitis. Proctitis, inflammation. Surgical, in this area, rectum का है prolapse of rectum. That happens when the ischiorectal pad of fat are gone because of malnourishment. And anal canal, अपना 3 fissure, piles, fistula. Fissure is the tear in the mucosa. Piles is enlargement of the anal veins. इसका लेवल्स है, एनलार्ज होते हैं। इसके लिए मैं ना मेरे बाजू में, ये आजकल कैसा है वो फिनिक्स मॉल वगैरह में टॉयलेट कैसा होता है ना, आधा ओपन, नीचे से ऊपर से ओपन, बाजू के सारे आवाज अपने को आते हैं। मेरे को गैस पास करने के आवाज से इरिटेशन नहीं होता है, और बाजू वाले को डायरी हो रहा है, ट्रोको जो भी कर रहे थे, दैट इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, दैट इज नॉर्मल। तो वो बाजू में से ऐसा होता था ना, मेरे को तो बाबा तू तेरा एनल वेन से एनलार्ज हो जाएगा, ऐसा मत कर, बिकॉज ही इज ट्रेनिंग। पाइल्स इज एनलार्जमेंट ऑफ द एनल वेन्स। उसके भी लेवल्स होते हैं, एनलार्ज होते हैं, फिर बाहर आने लगते हैं, फिर लोग फिंगर से अंदर जाते हैं, फिर बोलते हैं कि आता है, फिर जाता है, फिर ऐसा होता है कि आ रहा है और जा ही नहीं रहा है, फिर उसको फिर ऑपरेशन करते हैं, उसको बैंडिंग करके छोटा सा ऑपरेशन होता है। ये सबसे बेस्ट है, भाजी पाला खाओ। मैं किधर भी जाता है ना, मैं वो बोलते सर पनीर टिक्का मन क्यों नहीं, पालक भी तो, पालक प्लेन पालक, कुछ नहीं चाहिए। एंड फिस्टुला, सो व्हाट इज फिस्टुला? यहाँ पे फिशर हो गया, या यहाँ पे बाजू में तो हमारा एनल फोसा है ना, यहाँ पे इंफेक्शन हो गया, इन दोनों का सबका कनेक्शन हो गया। सो स्टूल यहाँ से बाहर आ रहा है, एक ट्रैक ही बन गया, एक ट्रैक का एक एंड एनल कैनाल में ओपन हो रहा है, एक स्किन पे ओपन हो रहा है। वेरी बैड। It can happen due to deepening of a fissure, or it can happen because of an abscess opening here and here, abscess starting from here and going and opening here, or fissure starting from here to here and opening here. Okay, fissure. And last is anal cancer. Anal cancer. Okay, so I'll stop here. Thank you.